Hey, hi everyone. Good morning. Hello, Good morning, sir. Good morning, Magishi. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Kiran. Good morning, sir. Good morning. Good morning, guys. So, could you please quickly type the installation status here in the meeting chat? How many of you are able to execute the Python code in PyCharm? Could you please type done in the meeting chat? Or shall I create a poll? Let's create a poll. Yes. So I've started the recording. So if you want to create a new project, you need to go to the main menu, click on new project. Okay. When you click on new project, here you need to give the project name. What is the project? Like what is the name of your project? And आपको वो project कहाँ पे create करना है? ये location पे you can create a project, or else you can change the directory from here. There is an option from where you can change the directory. Okay, so can give any name here, saying that is saying so in your case you can say like your name, and you can say Python practice. You can create a proper folder here, and under that folder you can create give your own name and say Python practice and create the project. I'm creating the different project here, say DA. And click on create. This window only. I hope still you're able to see the screen, right? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट योर प्रोजेक्ट नेम. ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेशन पे है, डी इंटेलिबीआई पाइथन दिस ये वाला लोकेशन पे दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट. Now if you want to create a Python file under this, so let me share the file location as well. So it will create a file location for us. Go to this. You can see it here. It will create this folder. This is जो भी project है ये folder यहाँ पे ही create करेगा with this name. And when you create a file here, let's suppose when you right click on this and go to the new, and यहाँ पे you can create a directory, a scratch file, Python package, Python file, HTML file, resource bundle and all, the Jupyter notebook, the file script. Basically it's a file type and directory. So we are working on the Python, so I'll be creating the Python file. So naming standard will use like Python, say program
20250627. So what the file name I have given, and I'll say print good morning. ठीक है, and ये फाइल को let's execute it. Okay, you will be able to see this message here. So यहाँ से आप फाइल क्रिएट करते हो, and when you go to the directory, it will create this file. Are you able to see the file in the directory? Screen is not visible. Is it not able to see the pie chart? Yes, we can. Pie chart you can see, right? Like you are able to see this message. Yes. Yes. Okay. तो यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करोगे, यू विल बी एबल टू सी द फाइल हियर. तो डायरेक्टरी में आपको फाइल दिख रहा है ये. Yes. And you can open this file with notepad as well. So it will you will be able to see this जो भी है यहाँ पे मैसेज, यू विल बी एबल टू सी दिस प्रिंट. और नोटपैड का फायदा आपको ये है कि दिस इज द पाइथन फाइल. सो ये जो रिजर्व इसके कीवर्ड्स है उसको वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट करेगा. सो ये लाइक ये नोटपैड आपके पास होना जरूरी है. गॉट इट? Yes. Sir. ठीक है. तो आप जो भी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ से मतलब आपके प्रोजेक्ट में जो भी फाइल क्रिएट करोगे, यू विल बी एबल टू सी ऑल दिस फाइल. ये लोकेशन भी यहाँ पे आपको लोकेशन दिखेगा. ये प्रोजेक्ट के बाद देयर इज अ लोकेशन, लोकेशन के अंदर यू कैन सी द फाइल्स. And यहाँ पे भी you can create a directory. So there is an option to create a directory, say new directory, and you can create a directory here. So you can create a different directory for the assignments. Maybe assignment 1, create a different directory. Let's say suppose assignment 1, 2, उसके अंदर भी if you want to create a separate directory, you can create it here. आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे जाओ, and you can create a directory from here. Otherwise you can create a directory from here as well, and all the related files you can put it inside this inside that directory. Okay, so यहाँ पे let's suppose I'm creating the directory which is say Python basic Python. Let's use the underscore or hyphen, maybe underscore, hit enter. So it will create this folder here, and I have an option to create a new, say Python first program 0250627, and yeah, maybe F1. So it will create this file under this Python basic Python folder or the directory. यहाँ पे again print Python is very easy to learn and execute it. So you will be able to see the message. So ये आपने कहाँ पे create किया? ये वाले directory में. So I'll suggest कि ये proper folders इसके अंदर create करो और उसके अंदर आपको ये files put करना है. एक ही स्क्रीन पे दो प्रोजेक्ट नहीं दिखते क्या इसमें? एक ही स्क्रीन में दो प्रोजेक्ट्स. हाँ, मतलब नहीं. जैसे एसक्यूएल में दिखता था कि ऊपर हाँ वैसे हाँ, नहीं। अगर आपको प्रोजेक्ट दूसरा ओपन करना है तो यहाँ से आप उसको स्विच कर सकते हो. ये जो ऑप्शन है, वी आर करंटली इन दिस प्रोजेक्ट, इफ आई वांट टू गो टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट, मे बी दिस वन.
So it will ask whether you want to open this Yeah, yeah, got project, it. this window or new window. So when you see this window, this project will get open. So यहाँ पे whatever it is, like it use a different function. So go to the like whatever it is. If you want to go to the current project, go to this window. तो यहाँ से आप switch कर सकते हो वो projects. ठीक है बाकी श्री? Yes, sir. ओके. सो प्रॉपर यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसके बाद उसके अंदर आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो. सो बेसिक पाइथन के अंदर वी हैव दिस 2 फाइल्स. ठीक है. नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड 2 things yesterday. So let me just create a new file, maybe under this basic Python. Go to this and say Python introduction. You can minimize this. Fine. So what is the Python? Why we need the Python? And yesterday, if you remember, we installed 2 things, right? So one was the Python, actual Python setup. What was the version? Is anyone able to recall the version? What was the version of Python? 3.13, I guess. 3.13. Yes, correct. This is the latest version of it. And first of all, अगर आपको कमेंट देना है सिंगल लाइन कमेंट, तो हम इसमें सिक्वल सर्वर में कैसे कमेंट देते थे सिंगल लाइन कमेंट? हाइपन से डबल हाइफन, राइट? जैसे कि ऐसे हमने कमेंट दे रहे थे. तो यहाँ पे इफ यू वांट टू गिव द सिंगल लाइन कमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन पाइथन you need to use hash. So single line comment. ठीक है. तो ये हाइफन यहाँ पे काम नहीं करेगा. Understood? And if you want to give the multiple line comment, multi-line comment, you need to use this single quote triple time, hit enter. And इसके अंदर you can write the multiple lines. Okay. So Python installation details. ठीक है. तो इसमें we have installed 2 things. First is Python, that is 3.13, which is the latest version of a Python. And the second one is your PyCharm. What is this PyCharm? The one which we are currently using. Yes, but उसको क्या बोलते हैं? What is the use of it? ID, right? Don't know. Don't know. Okay. तो यहाँ पे see, this is the actual Python. Let me do one thing again. Let me just open the CMD. Okay. And let me share the CMD with you again. I hope you're able to see the CMD. Yes. Yes, okay. So when I type Python hyphen hyphen version here, it will give me the version. So it was old version.
in my laptop. I think previously it was installed. And when I say Python, तो उसने क्या किया, ये पाइथन इसको ये जो वर्जन है उसने सीधा हमें रिडायरेक्ट किया पाइथन में. मतलब यहाँ पे आई कैन राइट द पाइथन कोड. सो इफ आई से प्रिंट हेलो. I am not able to see the CMD screen. Not able to see. What about No, others? notepad is visible. Yes, same for me. I am also not able to see that. Okay. Not able to see. Let me share it again, maybe. This one, and this one. Is it Visible visible now? now. Yes, Yes. visible now. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे से exit, use exit bracket. ठीक है. So what I was saying, when I say Python hyphen version, hit enter. You can use the upward arrow. It will give you the version of it. Okay. And when you say Python, hit enter, it will redirect you to the Python environment. Means what? Here you can write the Python code. Print. Hello, everyone. How are you doing? Okay. Let's close the bracket. Hit enter. That will print this. Able to see it now? Okay. So when you say C is equal to 12 plus 90 and hit enter, print C. If you print this, it will do the calculation and print the value. So basically what I'm trying to say is here, यहाँ पे हम Python program लिख सकते हैं, but आपको यहाँ पे लिखना कन्वीनियंट लग रहा है या यहाँ पे आईडी में लिखना कन्वीनियंट लग रहा है? ID. ID is more convenient. यहाँ पे इट्स UI, ठीक है. मीन्स इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वी कैन से. जैसे हमारा सिक्वल सर्वर में हमने पहले सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने SSMS इंस्टॉल किया, राइट. सो it was SQL Server Management Studio, SSMS. So ये क्या था? It was graphical user interface to the user. मतलब user को थोड़ा सा convenient होने के लिए there are some options, buttons on which we can click, right? So it's a user friendly environment उसको हम बोलते हैं. तो सेम चीज है ये पाइथन. मतलब पाइथन का कोड हम CMD में भी लिख सकते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड उसके हेल्प से वी हैव सम ऑप्शन. क्या ऑप्शन है? आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू फाइल, वी हैव दैट ऑप्शन. एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट इट. डिबग करना है, डिबग के लिए ऑप्शन है. So many things are there. It's a graphical interface. So it's a ID, right? And you can use any ID. Like yesterday, someone mentioned VS Code, Visual Studio Code, right? सो पाइचार्म की जगह पे आप VS कोड भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो. सो इसके अलावा वी हैव जुपिटर लैब इज देयर. देन वी हैव जुपिटर notebook. Okay, then we have something called spider. What else is there? Spider is there, Jupyter lab is there, Jupyter notebook is there. What all IDs are there? So when if I search for it, so many IDs are there. So Python
days list. You search it. 6 more. Let me share the screen with you again. Can you see the screen? Yes. So this is what the integrated development environment इसको हम बोलते हैं. It's a software for the Python. So इसके help से हम Python code execute कर सकते हैं. And there are n number of things. Okay. So if you see it is IDLE, then Visual Studio Code, PyCharm is there, PyDev is there, Visual Studio, then Eclipse में भी हम कर सकते हैं. PyScripter is there. The format which we use, will it be same for everyone? फॉर्मेट नहीं, उसका ऑप्शन यहाँ मतलब इसका फॉर्मेट सेम नहीं होगा हर जगह पे, बट इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर वन. मतलब उसका आईडी इज सिमिलर. मतलब एक आईडी पे आप काम करोगे तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन डिफरेंट आईडीज. ठीक है, तो ये सारे आईडीज है. जनरली पाइचार्म यूज किया जाता है, थोड़ा सा हेल्पफुल है. कैन सी पाइचार्म इज टॉप ऑन द लिस्ट. Spider is there, Visual Studio Code is there, Visual Studio Code भी यूज होता है. Py Development, Jupyter is there. So ये सारी आईडीज है जिसका यूज आप कर सकते हैं. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. ठीक है, सो क्लियर है सबको हमने क्या इंस्टॉल किया कल? एंड आपको करना क्या है, यू नीड टू पिन दिस टू द टास्क बार. जैसे आप ये पाइचार्म इंस्टॉल करोगे, पाइचार्म ओपन करोगे, पाइचार्म का जो शॉर्टकट है यू विल बी एबल टू सी ऑन द डेस्कटॉप. तो जैसे आप ओपन करोगे तो यू नीड टू राइट क्लिक, जो अपना विंडोज बार रहता है नीचे, उसमें वो पाइचार्म के ऑप्शन पे राइट क्लिक करके यू नीड टू पिन दिस टू द टास्क बार. देयर इज अ ऑप्शन टू पिन दिस टू द टास्क बार, वहां पे आपको क्लिक करना है. एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू जस्ट नीड टू, जो ऑप्शन है इस पे विंडोज बार पे, यू नीड टू क्लिक ऑन दैट. ठीक है, so I'll show you that as well. See, आप इसको ओपन करोगे. लेट मी क्लोज दिस. ठीक है, यू जस्ट नीड टू ओपन दिस वन. जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे यू जस्ट नीड टू से पिन टू द टास्क बार. सो अनपिन करेंगे तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी दिस ऑप्शन, पिन टू द टास्क बार. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस, इट विल गेट ओपन. गॉट इट? समझा सबको? Now see why we have to learn Python. Why people are using the Python nowadays? Why we have to learn Python? हमें क्यों लर्न करना है? कहाँ पे ये Python यूज होता है? What all places Python is being used in the nowadays? Why we have to use it? Why the organization are using the Python? Tell me, क्यों सीखना है हमें ये Python? Data related to that, like in data किरण, analysis. आपका आवाज थोड़ा सा ये आ रहा है. Can you please speak bit louder? Sir, Diwakar this side. Divakar, yes. Yeah, sir.
So data analytics, data engineering, data scientist इन सब में इसका यूज होता है. And apart from this, different project जैसे कोई application development and game development, so there we use Python. Data engineering, एप्लीकेशन development, game development. डेवलपमेंट में यूज होता है, सेइंग गेम डेवलपमेंट में भी यूज होता है. एंड डेटा इंजीनियरिंग यू मेंशन. Okay, Yes. good. ये तो this is important. But nowadays, like the data analyst के इसमें data related profiling में Python का बड़ा रोल है इसमें. That is correct. एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं. एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी वेब एप्लीकेशन भी हम डेवलप कर सकते हैं. स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हम यूजिंग पाइथन वी कैन डेवलप इट, एंड we can develop the game as well. That is correct. What all this? और क्या है, क्यों हम पाइथन यूज, क्या क्यों सीखना है हमें? We can perform file manipulation as well. File manipulation, again it's a part of a data analytics or the data engineering. So file में data है, so data के ऊपर we are doing some operations. So that is, I think, fall under this category. और क्या रीजन है, क्या लगता है आपको, why this Python is becoming a popular nowadays? For cyber security. Cyber security, okay. Cyber security related libraries we have, that is correct. Vast number of libraries that support AI, ML, data science related tasks. Yes, this is the important one. ये जो है ना Python, it is having the what we can say rich in library support, supporting to large number of libraries, and that is related to AI, that is correct, ML, machine learning, and data science, that is correct. The first pointer, that is important one, which is Python is open source. It's a free to use. ठीक है, मीन्स व्हाट, इसके लिए कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है. इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर. सो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे यू माइट नीड टू गिव the money to the companies. Let's suppose if you are using the Java programming language and if you need some features of it, so you need to pay to the Oracle, because Oracle owns the Java. यहाँ पे it's open source, मतलब free है, and it is rich in libraries if you want to do the AI, ML, data science, data engineering related things, data related things अभी ये popular हो रहा है. So this is that's the reason Python is being used here. Python supports cloud platforms like AWS, Azure. Yes, and mostly it is supporting to the GCP, Azure. That is correct. Python supports the cloud platform. Correct है. GCP में most of the code मतलब Google Cloud Platform में Python का code use होता है. Python supports cloud platforms like AWS, Azure, and GCP. हाँ, ये this is what the one more reason Python is becoming a popular.
What else? What do you think? It is a platform independent. So what platform independent means what? It can support multiple platforms, multiple operating systems, many operating systems. Ah, yes. OS, yeah. It's a Python can be or say Python supports multiple platforms in terms of operating system OS, like Windows, like iOS. So ये different operating system पे Python काम करेगा. It's not एक specific platform के लिए. Yes, this is correct one. And also Python use होता है. Python will be used for automation purpose. मतलब आपको कुछ ऑटोमेशंस करने हैं, डिपेंड मतलब कुछ जॉब आपको शेड्यूल करना है. शेड्यूल मतलब उसी टाइप पे आपको वो एग्जीक्यूट करना है. कुछ फाइल आया तो इफ यू वांट टू परफॉर्म सम एक्शंस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो. सो एंड बेसिकली ये जो टेस्टिंग रहता है आपका मैनुअल टेस्टिंग, उसमें भी ऑटोमेशन के लिए पाइथन का बहुत सारा यूज होता है. What else? It supports multiple databases. Database के साथ yes supports multiple data, or we can say uh, Python can be integrated with uh, multiple data databases or multiple file types. It supports it supports when we consider the advanced Python, there is something called pandas. So in the pandas, we have some libraries using which we can connect with the Oracle database. We can connect with the SQL Server database. We can uh, uh, work with the different file types like TXT file, CSV file. Then we have a Pake file. We have a JSON file. We have a XML file. ORC फाइल. सो दिस डिफरेंट फाइल टाइप के साथ भी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं. What else is there? Python is a functional and object-oriented programming language. Sorry, I missed that. Python is the functional and object-oriented programming language. Yes, function and object oriented. Oops, concept यहाँ पे Yeah. यूज होता है. That is fine. And it supports the third-party APIs like NumPy, Pandas. हाँ, so we can say that uh, supports means it's a data related operations on a high level. मतलब numpy पांडा का यूज डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है ज्यादातर. In pandas may we have something called data frame that is exactly similar to table that we have seen in the SQL Server. That is correct. What else is there? Sir, it's easy to learn, so that's why it is in demand. Sorry, Divakar. It's easy to learn, that's why it's in demand. Yes, this is very important point. Python is dynamic programming
language, and it is very easy to learn as compared to other programming language. Like Java and all. It's very easy. It's a dynamic programming language उसको हम बोलते हैं. So you don't have to define the data types and all. So it's very easy to use. So that's the reason again this is becoming a popular one. So even a new person can easily learn this Python programming language. सर पाइथन इजी है कि एसक्यूएल? पाइथन इजी है कि एसक्यूएल इजी है? दोनों का पर्पस अलग है. मतलब वी कैन से वो जो है इट्स काइंड ऑफ डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज, बट यहाँ पे वी कैन डू द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू कैन मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जावा का एंड पाइथन का कंपैरिजन हो सकता है, उसमें से पाइथन इज इजी. बट व्हेन यू से डेटाबेस, सो उसका पर्पस अलग है. सो डायरेक्टली वी कैन नॉट compare that in that way. Okay. Okay, so यहाँ पे there are some libraries actually which is explore that, which is related to the AI, which is TensorFlow library is there, then PyTorch is there, then we have Seaborn, Metaplot. Metaplot library is there. So ये सारी libraries which is related to the AI ML data science related libraries है. So inbuilt libraries है, so it will be used. So this is what the advantage and why the people are using the Python, why the Python is becoming very popular. Now it is having some disadvantage as well, like why the people are not using the Python, or say limitations. So Python. हाँ, तो यहाँ पे और एक चीज है, एज वी मेंशन हियर, कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग इज इजी टू लर्न है, मतलब इजी टू इम्प्लीमेंट द कोड भी है. कि एक प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है जावा में और दूसरा प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है पाइथन में. तो होता क्या है कि पाइथन का जो प्रोजेक्ट रहेगा इट विल बी फिनिश्ड अर्लियर देन द जावा प्रोजेक्ट. सो उसमें कंपनी का कॉस्ट भी सेव होता है. तो इजी होने की वजह से वहां पे कॉस्ट सेविंग भी होता है कंपनी का. बट इसका लिमिटेशंस ये है कि like we can develop the mobile applications, but it is not having that stronghold. Like the people are not preferring the Python to develop the uh, applications, mobile applications. Like we can develop the Android application, right? Using the Android, we can develop the application. Though Python में ये features है कि हम वो application develop करते हैं, but the people not preferring this. So mobile applications में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है. देन बैंकिंग के जो वेबसाइट्स हैं वहां पे आई नेवर सी, मतलब मैंने देखा नहीं कि पीपल आर यूजिंग द पाइथन, बिकॉज जावा इज मोर सिक्योर देन द पाइथन. बैंकिंग वेब एप्लीकेशंस एलसी. ठीक है. तो होता क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी राइट अ पाइथन प्रोग्राम, व्हेन वी राइट अ जावा प्रोग्राम. सो इवन इफ आई हैव टू राइट अ, if I have to print a simple word like print hello world, so in Java may at least you have to write
at least 6 to 7 or maybe 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. Public void main, then curly brackets के अंदर you need to print something. So you will have that around 5 to 10 lines of code to print a simple word there. But in Python, you just need to, you have inbuilt functions, use that and print it. So it is very easy. When it is easy, then you means internally it is using its own libraries and all. So when it is easy, it is not that much secure, you can say. So for the secure applications, like it's not like it is completely unsecure, but जहाँ पे strong security लगता है जैसे कि banking web application, the people are still preferring Java over to Python. Got it? Understood? Yes, sir. Okay, and also the performance wise, Java is also having the upper hand over the Python. Okay, so this is what the Python related things, what we have installed, why we have to learn, why this Python is becoming a popular nowadays. इसमें किसी को कुछ questions या doubt है इसमें? Yes, no, maybe. No doubt. लाइब्रेरीज क्या होता है थोड़ा बताओगे क्या? मतलब Libraries matlab it's inbuilt feature, means you just need to use those libraries. उन्होंने date के लिए libraries लिखा है, so you just need to use the features. उसका code already implemented है, you just have to use this function. So when you use the function, it will use that code, execute it, and it will give you the result. मतलब हर एक चीज के लिए आपको खुद का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं. वो आपको क्लियर हो जाएगा. वी नीड टू इम्पोर्ट दोज लाइब्रेरीज. सो वो वाले केस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लाइब्रेरीज वी नीड टू इम्पोर्ट सम लाइब्रेरीज, विदाउट दिस वी कैन नॉट प्रोसीड अहेड. सो वो वाले केस में आपको डिटेल में पता चल जाएगा. बाकी ओके. we are going to use the libraries. There is something called libraries, module. So ये सारे integrated रहता है. So we need to function, module, libraries. We need to import that first and then we can use it. उसको क्या बोलते हैं? Readily available package or something like your package is also there. It's a ready to use code or the feature we can say. It will make the developers' life easy. Okay, so anything else? Any other questions? No. No questions. Fine. Then one more thing is there. This one, Python is what about the SQL? SQL was a case sensitive or insensitive language? It was not Insensitive. sensitive. Insensitive. And what about Python? It is insensitive, but in case of variable declaration, it is sensitive. Okay, no variable, that is fine. Like it's a user defined name, but I'm talking about the language. When we say a language, see, यहाँ पे हमने ये print and उसके bracket में we have used this, right? So when we print, it is printing this, it's working for us. But when I say P in capital and when we execute, तो इसको ये print का meaning समझ में नहीं आ रहा है. Correct? जैसे हम अगर if I'm writing the select statement, if I write select star from EMP, and even if, when I say
select star from EMP. ये दोनों स्टेटमेंट काम करेंगे या नहीं करेंगे? Yes, sir. ये दोनों भी स्टेटमेंट्स काम करेंगे, राइट? तो SQL क्या हुआ? व्हाट इज द SQL? SQL लैंग्वेज is not case sensitive, right? Agree? Yes or no? Yes. Yes. But whereas this Python is case sensitive. Okay, so we can say Python is case sensitive language. ये difference है दोनों में. Means what? You just need to write it in the given case only. If you write print in a capital letter, it won't work. If you write it in the init cap, it won't work. Copy करो इसको, नीचे लेके आओ. करो इसको नीचे लेके आओ. If you write it here, say print. If you execute it, it will give you the error. Selected code. Console में आप execute करोगे इसको. So if you can see it here, print is not defined. ठीक है. But when you say print in lowercase letter, and when you execute this particular part, so you will be able to see the message. But if you execute this, execute on console, you won't be able to identify the meaning of this print. Got it? Clear है सबको? Yes. Yes, sir. Fine, good. Now let's do one thing. We'll start with something called operators. Basic Python के अंदर go to the new and create a new file, that is Python operators 0250627. Okay, what we'll do is we'll have a quick break here for 10 minutes and उसके बाद we'll start with the operators. Okay, each operators in detail. Is that fine with everyone? So what all operators are there in Python? Most of the operators हमने SQL में देखे हैं. Logical, comparison, arithmetic, bitwise. Logical. Right. See. Logical operator. Relational. Comparison operator. Assignment. Assignment. Alignment.
Membership. Membership operator, yes. Identity. Identity operator, correct. Arithmetic. Arithmetic operator, correct. बिट वाइज जो है वो यूज होते हैं सर इसमें? बिट पे ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है, बट एज ए डेवलपर इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते उसको। बिट वाइज ऑपरेटर है एंड और something called ternary operator, so if else के जैसे यूज होता है, so ternary operator। अरिथमेटिक को हम ऊपर लेके जाएंगे। बिटवाइज एंड टर्नरी, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या है? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर? एडिशन, एडिशन इज देयर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज देयर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिवीजन का है, एंड मॉड्यूलस। One more is there, star, star, I think. Star, star, slash, slash. These all. फ्लोर डिवीजन उसको बोलते हैं, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। Yes. Then in case of logical operators, we have And or not. and or Not. not। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सीक्वल में, सो इट इज देयर एज इट इज। कंपैरिजन में व्हाट वी हैव, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ Less than, है। greater. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, देन लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, Double equal to. Equal to. असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट। सो इज इक्वल टू, Equal to आएगा इक्वल इसमें. टू इज असाइनमेंट में आ जाएगा। क्या है और क्या बचे? Double equal to. Equal हाँ, to equal to. इक्वल टू यहाँ पे, हाँ ये डिफरेंस है, यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज होता है कंपेयर करने के लिए, जो सीक्वल में सिंगल इक्वल टू ही यूज होता था कंपैरिजन के लिए। Yes. असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है? Equal to. इक्वल टू Plus. असाइनमेंट के लिए यूज होएगा। देन Plus equal to. Plus equal to. Minus यस, equal to. एडिशन इक्वल टू, देन ऑल दिस, माइनस इक्वल टू, multiplication equal to, division equal to, likewise we have the assignment operators, correct। then membership operator में क्या है? In, not in. in, Not in. not in। identity operators में क्या है? Is, not is. is, not is। bitwise में we have And. and, comma or। so ternary operator, it's kind of a if else like statement, so it's a ternary operator, ठीक है। तो arithmetic operator, let's create a new file for the same। Go to the new, to the file py operator 250627, hit enter।
ठीक है। सो इन पाइथन में वेरिएबल हमने कल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो डिक्लेयर वेरिएबल कैसे किया था हमने पीएल सीक्वल के प्रोग्रामिंग में? व्हाट वाज द प्रोसेस टू डिक्लेयर द वेरिएबल? Declare keyword. Declare Declare at the rate, then let's suppose a, right? And then I have to give what? Variable. Data type, Data type. varchar, let's suppose ऐसे, and इसको मुझे वैल्यू सेट करना है। तो what was the syntax to set the value for this variable? We have to say set. set at the rate a is equal to 10, correct? Correct. So in Python, means in most of the programming language, you need to declare or define this variable, declare this variable in this way. We need to give the data type of it. उसका क्या data type है ना? But the Python is high level interpreted language. उसको dynamic language भी बोला जाता है. And so that's the reason it's easy to use. So in that case, you don't have to define the data type of it. It is having the, like, it can understand the data type, what the user is trying to define for this variable. So यहाँ पे you don't have to do it. अगर आपको कुछ define करना है, say PLSQL variable declaration. ठीक है, कैसे होता है? Step number 1, we need to define it first, and then the step number 2, you need to set the value of it. तो यहाँ पे there is a assignment operator में is equal to operator is, right? So I have to define the value for a. A is equal to 23,450.67, and I'll print this value of a. That's it. You don't have to define the data type of it. You just assign the value and use it. Got it? Yes, sir. Yes. If you want to see the data type of it, there is a function called type. When you say type of a, it will give what is the type of a data type. So if you see it here, class, that is float. It's a float value, kind of a decimal value we have. So when you say 23, execute it. What it is saying now? Integer. When you say Amit, it will say string. It's a dynamic programming language. It will able to understand what is the data type of it. It's not related to data type, but we don't have to provide this all these things. So it's a high level interpreted language उसको बोलते हैं. ठीक है? Understood? Sir, on line number 5, if we pass true, If we pass true, it's a Boolean data type. So when we say true, it will say Boolean. Yes, so if you say class, okay, and it's a Boolean value. if we pass single quote, then it will become string, no? Single quote, it will become a string. If you pass single quote, it will become a string. Okay. If you remove a single quote, it will become a Boolean value. We are going to discuss this data types. मतलब जो data types हमने discuss किए, मतलब यहाँ पे देखे जैसे कि int हुआ, string हुआ, float was there, then a Boolean was there, then right, string, float, Boolean. So likewise, we have some other data types as well. So जैसे operators हमारा खत्म होता है, we'll discuss this operators. कौन से sorry, ये data types है इसमें Python में. Okay. तो
So arithmetic operator already you know that everything you know it. ठीक है, तो इसमें a is equal to 10, b is equal to say 30, and if you want to perform the arithmetic operations, so print a plus b. ठीक है, इसको कॉपी करो, paste it here as a string. ठीक है, is equal to this value. Remove this bracket, copy, paste. So arithmetic operators will perform this. So there is a only difference here. This is the only additional what we can say, and the operator you might be able to see it's क्योंकि ये additional subtraction, multiplication, division, ये सारे हमने तो इसमें डिस्कस किए थे SQL में, करेक्ट. Minus, multiplication, division is there, and floor division is also there. Floor division मतलब क्या? Double slash. Just replace it here. What is this? Multiplication, it's a power, exponential, it's a division, it's a, again, multiplication, and there is one more operator is there, which is double star. It's a power, exponential value. Okay. So, and let's execute this. Are we getting the correct values? Yes. Yes. So when we say 50 and 30, you will be able to see 80, 20. This is a multiplication, division is the remainder, and this is the exponential value, means 50 into 50 into 50, 30 times. So when I say 5 and 3, so what we will get the value for this exponential? 125. What we are expecting? 125. 125. Okay, so let's execute this. So 125. What it means? 5 into 5 into 5. 5 into 5 into 5 is equal to 125. And what is the difference between this floor division and division? ये दोनों में क्या difference आपको नजर में आ रहा है? It will slash operator will give value in decimals, and double slash is floor division. That means it will round down the value. हाँ, इसको राउंड करेगा, बेसिकली इसको इंटीजर में वैल्यू देगा. यहाँ पे यू विल गेट द डेसिमल वैल्यूज. सो जो आपको जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको यूज कर सकते. ठीक है. प्रीवियस इंटीजर देगा ना सर? हाँ, मतलब ये पहला जो इंटीजर है यहाँ पे जैसे कि 1.666 है, तो ये एक ही देगा. इसके बाद जो भी रहेगा इट विल ट्रिम दिस. ओके. ठीक है. गॉट इट? यस. ठीक है. नाउ यू टेल मी, it's having some root, right? So when I say print and when I say 10 plus 3 into 4, say into maybe 10 minus 3, say
divide 5 minus 3 plus 80. Give me the answer of it. $31. $31. 31. 31. Write your answers in the meeting chat. 31 and minus 5. Give me your answers. What it will return to me. Okay, 31, majority of the people are saying 31. Let's try it. Okay, so let's execute it. So this is what the answer, which is 31. Right, so you know that, right? So the sequence, how it is getting executed. So now if I do the, so bottommost rule, each one of is aware, right? Same, it will be applicable here. It will execute it from left to right. And if I apply, let's say, suppose if I apply this, like, then tell me what will be the answer. $31. Okay, so 25 is the answer. Let's check it. So it will go from left to right. I don't want to debug it. I just want to execute it. So 25 is the answer, correct answer. Okay, so Bodemas rule will be applicable here. And it will go from where? Execution will go from left to right. Okay, and it will give the priority to what? First of all, it will give the priority to your brackets, correct? One is your, so then the second one will give you the priority
So here, what it will do, it will go for the, it will give the priority for the exponential value first, okay? And then the hash, it will go to this multiplication, division, give the priority, and then give the priority. Fourth priority will be your, say, floor division also there. And it's your addition comma subtraction. ठीक है, ऐसे इसका sequence रहना चाहिए. I think this explanation is having the highest priority. Check that once, and it will execute it from the left to right. ठीक है. So for the arithmetic calculations, we follow the BODMAS rule here. ठीक है. Clear सबको ये arithmetic operators? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So ये सर मेरे को additional ये operator है, ये सिंटैक्स थोड़ा इसमें ध्यान रखो. हेलो Yes, बाकीश्री. सर वो सिंटैक्स ऐसे ही लिखते हैं क्या, मतलब 2 बार लिखना पड़ता है क्या, पहले एक बार सेमीकोलन में और फिर एक नॉर्मल? ये वाला यहाँ पे बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या है, देखो, let me just take it to the new. ठीक है. So this is the variable. ठीक है, variable में है, I have a variable called भाग्य श्री. ठीक है, दिस इज द वेरिएबल, मतलब इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ. इज इक्वल टू, मैंने आई हैव डिफाइन से 5. एक वेरिएबल मैंने लिया, उसको मैंने डिफाइन किया 5. सो व्हेन आई प्रिंट दिस वेरिएबल, आपको ये वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, तो यू जस्ट नीड टू से व्हाट, यू जस्ट नीड टू गिव this variable without any bracket. So let me do one thing, let me take it to the new sheet, so I will be able to explain you in a better way. Say Python comparison operator 0250627. I was explaining this. So मैं अगर यहाँ पे इसको without सिंगल कोट लिखता हूँ, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ, मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट करेगा, दैट इज 5. करेक्ट. अगर मुझे इफ आई हैव टू प्रिंट इट एज अ स्ट्रिंग, आई विल सिंपली ऐड द सिंगल कोट हियर. तो इसका ये वेरिएबल का वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द स्ट्रिंग, राइट. राइट. तो मैंने यहाँ पे a लिया. ठीक है, इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, मतलब आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, प्रिंट a इज इक्वल टू 5. बट मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले करना था कि a इज इक्वल टू 5, एंड देन देर आर टू थिंग्स नाउ. इसमें हम दो चीजें प्रिंट कर रहे हैं. कल क्या हो रहा था प्रिंट में, इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रिंट लिखा था, देन उसके बाद इट वाज ओके, हाँ, प्रिंट वाज देयर. देन उसके बाद हमने क्या लिखा था, लेट्स सपोज आई हैव टू से a is equal to, then I was concatenating with the a variable, right, यस. using word plus operator. एंड ये भी उसको कॉन्केटिनेट करना पड़ रहा था मुझे. सो कास्ट ऑफ a as string something, or it was not string, it was वेरी. ऐसे. तो ये प्रिंट करा, तो यहाँ पे it's not needed to cast and all, you just need to say this is what your string के बाद there is one more argument, that is your variable, that is a. So for our understanding, we're just writing a is equal to, this will take the variable value, this is the kind of string, a static string. ओके, टू डिस्प्ले लाइक द. गॉट इट. So इसे display करने के लिए, that's it. So a is equal to 5. ओके, गॉट इट.
Okay, fine. ऑपरेटर्स कहाँ पे है? यहाँ पे कंपैरिजन। अच्छा, लॉजिकल था क्या? ठीक है, हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लेंगे पहले। सिंटेक्स का ही सब ये आपको सिंटेक्स ही अडॉप्ट करने हैं। इवन आई मे स्ट्रगल फॉर द सिंटेक्स फॉर फ्यू डेज cause we are switching from SQL to directly Python, so we may face the challenge, not challenges, but वो थोड़ा सा सिंटेक्स में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। we might see sometimes कि ये सिंटेक्स नहीं काम कर रहा, थोड़ा सिंटेक्स यहाँ पे अलग है, वो सिंटेक्स ही अडॉप्ट करना है। अदरवाइज ये आपको पता ही है व्हाट इज दिस ऑपरेटर्स एंड ऑल, राइट? उसका दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स डिस्कस किए हुए हैं SQL। स्टिल वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स you already know, right? So similarly, arithmetic operators का I'll copy the code and you will be able to know कि ये कैसे काम कर रहा है। Is equal to 5. So what I'll use here is a is less than equal to, give less than, what it will return? Minus less than equal to. Similarly, paste the value of it. It's greater than, give the greater than value. So greater than equal to, greater than equal to, then not equal to, not equal to, this is not needed. So the comparison operator. So what it will return? What do you think? True, false, or boolean. False. Is right? So if I execute it, so it should return true false. So if you can see it here, it's a false. A is not less than B. So a false is not less than equal to B. False. A is greater than B. True. A is greater than equal to B. True. A is not equal to B. So true. Got it? It will give us the true false value, and we can use this in a kind of if else block. We have a if, we can give the condition here that if it is true, say this one, यहाँ पे you need to give the colon, and there is something called indentation. When I hit enter, उसने already एक tab यहाँ पे जगह बनाया। उसके बाद we can say print something, a is greater than b, ठीक है? and इसके बाद else I'll print vice versa. Okay, I'll say b is greater than a. ये ऑपरेटर्स हम जो है ये यूज कर सकते हैं कहाँ पे? So you can see it here, b is greater than a. उल्टा लिखा क्या मैंने? Less than, b is less than a. Correct? Understood? So ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, you can use in the conditions. Getting it? Clear है सबको? Any questions, doubt? Clear. ठीक है. So this is what the comparison operators. So let's create a new file for assignment operators. Will be file 0627. You'll get all these files, okay? As like a SQL file, you'll get all these files. So here's the operators. Assignment operators. Copy it.
Pasted here. Okay, assignment operators may already we discussed. If you want to assign some value, A is equal to, when you say 56, so what it will do? Print A. We are assigning the value. Yes or no? 56 will be assigned to A. Correct? Agree? Yes, sir. But here, what you can do is you can assign the multiple variable ko if you want to declare a variable, a multiple variable with same value. So you can do it in this way. A, comma B, comma C, comma D is equal to 50. And when you print, say A, A is equal to comma A. Similarly, just copy it, paste it. So give B, C, D is equal to D value. That's it. If you print it to the new line, maybe you can use -n B, sorry, this \n. It will print it to the new line. Unpacked not iterable integer object. Okay. So it should be, okay, should be cannot unpack non-iterable integer object is equal to this. Okay. Should be able to BCT, right? Should be able to assign the value, right? Multiple values it should. I say 50. Okay, sorry. It should be, if you are assigning the multiple values, 50, 10, 40, 40. Yes. Now, if you do this, multiple values can be assigned using single line. Got it? So this 50 will be assigned to the first value, that is A. B will be assigned, like 10 will be assigned to B. C will be assigned to, like 40 will be assigned to C. And again, this last value, if I say 45, this will be assigned to the last variable. Got it? Yes. 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 समझा सबको? Yes. ठीक है. Now, Yes. ये जो है, it's new line इसको बोलते हैं characters. मतलब new line, अगर if I'm not using it, if I remove this new line, it will print all these things into a single line. ठीक है? It's a new line इसको बोलते हैं. ठीक है? So it will print the single line. उसके बाद if you want to print it to the new line, you need to say new line character, this \n. Now this is what the equal to operator. Addition equal to मतलब क्या? So let's assume that we have second expressed it. So let's assume that A is equal to 40. And when I say A plus is equal to 10. Okay, and then print A. What it will do?
What is the meaning of it? That means A is equal to A plus 10. Will print 50. It's 50. printing 50. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू a is equal to a plus 10. मतलब if I write a is equal to a plus 10 or if I say a plus equal to 10, both are the similar. Okay, Yes. so see, I'll make a comment here. इसको हम uncomment करते हैं. So it's printing what? 50. तो a का वैल्यू क्या है? 40. 40 plus 10 that is 50 and 50 असाइन हम किसको कर रहे हैं? a को. So either I can write in this way or I can write in this way. Both are the similar. Got it? समझा सबको? मतलब सर वो सेपरेट एडिशन का कमांड लिखने के इंस्टेड ऑफ दैट वी आर राइटिंग a प्लस, ऐसा है क्या वो? Yes, yes. हाँ. Okay. So one more assignment method is there ना? That is also मतलब वो नहीं का A is equal to B is equal to 10 ऐसे भी लिख सकते हैं ना? Okay. So नहीं assignment. that you can do, like multiple assignments you can do. Yes. So if you can see, it will pass the values. A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to, and then if you say 70, so it will start assigning from right to left. मतलब क्या कि 70 will be assigned to D. D में क्या है? 70. 70 will be assigned to C. C में क्या है? 70. 70 will be assigned to B, and ये जो B है, B will be assigning to A. मतलब B का वैल्यू A को असाइन कर रहा है. 70 D को असाइन कर रहे हैं. तो D में क्या है? 70. D का वैल्यू C को असाइन कर रहे हैं. C में क्या है? 70. मतलब C का वैल्यू B को असाइन कर रहे हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे असाइन. सो इफ वी प्रिंट ABCD अगेन यहाँ पे, सो यहाँ पे इट विल बी 70 for all. Yes, that is correct. So, you see this 70 for all. Yes, that is correct. ये भी हम कर सकते हैं assignment using equal to. Yeah. So if I say 45 and if I say A into 5 and if I say print A, what will be the answer of it? इसका क्या आंसर रहेगा? और से let's make it simple maybe. यहाँ पे I'll say 5. Now tell me. 25. 25. 25. Yes. Yes. 2 to 5 या 25? तो 2 to 5 तो पहले आपने वो लिखा था ना 25. हाँ, उसका 2 to 5. हाँ. ठीक, fine. So 25 is the correct answer. Okay, great. So this is what the assignment operator is. इसको हम बोलते हैं, it's addition equal to subtraction equal to multiplication equal to division equal to, like this. This is what the assignments operators. But there is a way to assign the multiple operators as a single line, and this is the way using which multiple variables को same value अगर आपको assign करना है, तो you can use this equal to. It will start assigning the value from right to left.
Okay, so this is what the assignment, comparison operators, arithmetic operators, and then Logical is pending. which one? Logical. Logical is pending. Yes, logical आपको पता ही है. एंड और कैसे काम करता है ये हमने डिटेल में देखा था, राइट? दिस वन से लॉजिकल ऑपरेटर्स 202500627. एंड और मतलब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं, राइट? So when I say print, that is a true, and true, what it will print? What it will print? True, correct? True. Means it's exactly similar to this. When I say 10 is equal to 10, ठीक है? 10 is equal to 10 and 20 is greater than 10. Yes or no? So it won't allow me to print. This is the case. Okay, so if I execute it, expression cannot be contain assignment. It should be equal to equal to. The operators change हुआ ना यहाँ पे. When I say 10 is equal to 10, so is it true or false? True. True. 20 is greater True. than 10. Is it true? True. Right. So true and true, it will always return true value. जो हमने सिक्वल में देखा था, exact rule will be applicable. ठीक है. Similarly, if you see it, oh, sorry, I should go for and first, right? True and false, then copy paste, then false and true, false and false. What it will do? Second one, what it will return? False. Will return what? False. False. This one? False. 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 Executed. So पहला जो है, it will be true, true, false, false, false. Correct. सर मेरे को नहीं समझा. Okay. Can anyone explain this? Yes, Yeah, sir. yeah, correct. Hello. Yes, sir. Shall I? Hello. Yes, Yes, yes. yes. Yes, go ahead. Yeah, you can explain it. Okay. So, for the logical operators, there are some rules. For example, for AND operator, there is a rule that the conditions or the values we have passed or the conditions we have passed all should be true. Then and then only AND will produce the true result. Matlab, if you are passing two conditions, so both the conditions should be true.
then only it will give the true result. So in first example we can see print true and true. Here both the values are true, both the conditions are true, that's why it is returning true value. In second example, one value is true and another is false. So what is our rule? Keep both the values should be true. That's why it is Okay, returning so false. it means in the, for example, in the line 12, we have written print true and false, which means the first, what is 10 equal to 10 should be true, and 20 is greater than 10 should be false. But 20 is greater than 10, it's true, and that's why our AND condition false, and that's why the result is false. I think we Is it can like take the that? example of +1 and -1. It will be much easier to understand. No, I just want to ask that true and false we have written in the line number 12. तो वो 10 इक्वल टू 10 वाले को कंपेयर कर रहा है ट्रू से, और 20 इज ग्रेटर देन 10 उसको कंपेयर कर रहा है फॉल्स से, कि ये फॉल्स है या नहीं. इज इट लाइक दैट? एंड देन उन दोनों का रिजल्ट वो कंपेयर करेगा, मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको. ओके ओके भाग्यश्री, सी ये जो है एग्जांपल हमने एक सेपरेटली देखा था कि यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर है हमारे पास, एंड और नॉट. एंड में क्या होता है, वी रिक्वायर बोथ टू, द कंडीशन. हाँ हाँ, दो दो कंडीशन हमें चाहिए होगी, राइट. तो यहाँ राइट. पे वी हैव गिवन लाइक कंडीशन देने के वजह हमने सीधा उसको ट्रू फॉल्स वैल्यू दे दिया. बट यहाँ पे आप ये एग्जांपल देखोगे, ये दोनों भी है, इट्स अ ट्रू काइंड ऑफ, इट इज रिलेटेड टू दिस. बट इफ आई हैव टू क्रिएट अ सेम एग्जांपल हियर, मे बी फॉर दिस. कि मतलब प्रिंट जो अभी लाइन नंबर 13 है अभी, हाँ सॉरी हाँ 14, तो ट्रू एंड फॉल्स ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? मतलब फर्स्ट ट्रू है, सेकंड एंड लिखा है, फिर फॉल्स लिखा है, दोनों सेम नहीं है इसलिए फॉल्स आया. यस, ओके, मतलब नहीं मुझे नहीं नहीं लगा नहीं कि ये नहीं ऊपर नहीं के नहीं, साथ. ट्रू एंड फॉल्स इट्स अ बुलियन ऑपरेटर. मतलब देखो ये जो है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. ट्रू. ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. ट्रू. ये दोनों भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, सो दैट्स द रीजन इंटायर कंडीशन इज रिटर्निंग ट्रू. सो ये आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो, दिस इज ट्रू, दिस इज रिटर्निंग ट्रू. इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स अ बुलियन वैल्यू. ओके, बट इट्स इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू द लाइन नंबर 9, राइट? इट्स नॉट रिलेटेड टू द लाइन नंबर लाइन, इट्स इंडिपेंडेंट. इट्स मतलब इट्स सेपरेट बना है. गॉट इट, नाउ आई गॉट इट. हाँ, तो यहाँ पे आई हैव टू क्रिएट अ एग्जांपल फॉर इट. सो इफ आई से 20 is less than 10, so it will return true, it will return false. तो ये जो है entire thing, it will return what, it will return फॉल्स. false. तो ऐसे गॉट it's इट. independent, गॉट इट. it's not इसका और इसका कोई चाहिए नहीं है. देखो अब मुझे इसको लगा मैं कि प्रिंट उसके करूंगा. डिपेंडेंट नीचे लिखा है, ऐसा लगा. नहीं नहीं ओके, गॉट नहीं. इट, गॉट इट. वो कंपेयर कर रहा है वही स्टेटमेंट में एंड के पहले और बाद में क्या है, उसके साथ ही एंड ऑपरेशन हो रहा है. करेक्ट. सो आप ये देखोगे यहाँ पे, दिस इज व्हाट इट इज, और सही इज इक्वल टू, इसको करो एग्जीक्यूट, and you can say 10 is equal to 10, it will return true. 20 is less than 10, it's a false. True false, it will return false. Likewise I'm just telling you गॉट कि इट. ये जैसे, ठीक है, समझा. हाँ, So ये गॉट क्लियर इट. है थैंक सबको? Is it clear to everyone? हेलो सर. Yes Nitin. सर मुझे सिर्फ सिंगल लाइन एक फायर करने, तो मैं कर सकता हूँ क्यों? सिंगल लाइन पे फायर करने, एग्जीक्यूट करने मुझे सिर्फ, और रन करने मुझे. हाँ हाँ कर सकते हैं ना. जैसे कि आपको इसी को एग्जीक्यूट करना है, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ऑप्शन है एग्जीक्यूट सिलेक्शन इन पाइथन कंसोल. इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे एक कंसोल ओपन होगा. देखो यहाँ पे, एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर लाइन, 10 इज इक्वल टू 10 एंड 20 इज लेस देन 10 इज इक्वल टू फॉल्स. सो इसी एक पर्टिकुलर लाइन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके सर. ठीक है, आपको अगर मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट करनी है, सिलेक्ट करो इसको. जैसे कि मैं इसको कॉपी करके, लेट्स पुट इट इनटू अ स्ट्रिंग, एंड इसका रिजल्ट ये है. उसके बाद जस्ट गिव द कॉमा. सिमिलरली जस्ट copy it here and just add a single quote. यहाँ पे just give the comma, and इसको, ये तीन लाइन को आपको एग्जीक्यूट करना है. राइट क्लिक करो एंड से एग्जीक्यूट ऑन द कंसोल. सो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन,
3 लाइन को वो कंसोल पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप नहीं करते हो, सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। समझा नितिन? Yes, yes. ठीक है, तो ऑपरेटर्स में आई थिंक वी आर गुड विद द लॉजिक। नॉट एक पेंडिंग है। नॉट मतलब क्या, कैसे काम करेगा नॉट? आप ही लॉजिकल ऑपरेटर्स, दिस इज व्हाट द लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट? सो ओपन इट। मतलब a kind of something, say print, okay, not 10 is equal to 10। ये क्या प्रिंट करेगा? is equal to कंपैरिजन मतलब is equal to you, what it will print, what you think? ये क्या प्रिंट करना चाहिए उसने? टेल मी। false. It will produce false result. फॉल्स या ट्रू? Yeah, false. वी डोंट हैव टू गिव द सेमीकोलन अमित। सेमीकोलन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। सेमीकोलन इवन सीक्वल सर्वर में भी सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है। ओरेकल में हम सेमीकोलन देते हैं, दैट इज एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे नो नीड टू गिव द सेमीकोलन फॉर मींस, यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है। सो इट विल से फॉल्स। तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करेगा। नॉट, सो इट विल से फॉल्स, राइट? मींस 10 is equal to 10, that is true. Not true means what? False. What it means? When I say this, not true. When I say not true, will be false. Not true, false. And when I say not false, then what it will return? True. True. Not false, true. Like you can give the condition not, means उसको उल्टा करेगा, ठीक है? It's work like negation, right? Yes. ठीक है, तो ये बाकी के ऑपरेटर्स है। कौन से बचे हैं ऑपरेटर्स? मेंबरशिप, इट्स इजी वन। आइडेंटिटी, बिटवाइज को हम स्किप करेंगे, ये बिट ऑपरेशंस अननेसेसरी, इसको लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। टर्नरी भी हम देख सकते हैं, बट बिफोर टर्नरी वी नीड टू डिस्कस दिस इफ प्रॉपरली। इसके ऊपर विल यू डू सम रिसर्च मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी के ऊपर? इन नॉट इन, तो एग्जैक्टली मींस ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस इन द सीक्वल। आइडेंटिटी थोड़ा सा इसमें अलग कंसेप्ट है, तो वी नीड टू डिस्कस दैट, बट स्टिल यू कैन सी कि ये कैसे काम करता है। दिस वन इज द इजी वन, आई वांट यू टू एक्सप्लोर दिस। ये भी इजी, इट्स नॉट इजी, बट इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, एड्रेस एंड ऑल, सो दैट वी नीड टू डिस्कस। along with this, if you try to discuss the data type, means थोड़ा सा रिसर्च करो डेटा टाइप पे, say python data types। ठीक है, सो व्हाट ऑल डेटा टाइप्स आर देयर? जैसे कि लिस्ट हुआ, सेट हुआ, टपल हुआ, डिक्शनरी हुआ। आई वांट यू टू जस्ट रीड अबाउट इट एटलीस्ट, तो आपको थोड़ा समझेगा। Okay, so with this note we'll stop. Let me know if you have any questions, otherwise we will